पृथ्वीवरून आलेला वाटतो. हेलो थंडर भाई कैसे हो? सदैव हे स्वर्गात कसं आलं? बुवाच्या नावानं आणि मला एकट्याला सोडून गेलाय. अरे पण तुझं नाव काय? तुझं गाव कुठलं? ए स्वर्गात आलेला पाहुणा माणूस पाहिजे. तुम्हाला काय रे आज कौन है ठंडा? अरे भाई अभी ये इवेंट पूरा कर रहे हैं अभी, ठीक है? करेंगे आज वीकली बॉस भी करेंगे. आमच्या पृथ्वी तलावर माणूस आला त्याच्या नावाला द्वारे आम्ही मी सावळ्या कुंभा माती तुडावतो, मडकी घालवतो, बाजारात नेऊन विकतो. तसा माझा प्रपंच मस्त आहे बरं का. अरे आज कमी करा नका, भांगा मोरा कोण ढाला दो. बुवा तिकडे इंद्राला भेटायला गेलाय ना. म्हणजे आपण देवेंद्रांचे यजमान सर. हा तसंच आहे काय. मला वा वा म्हणजे तुमचं चालू आहे ना आम्हाला फळं खावंय. देशी का इंग्लिश आहे. पहिल्या हरीचा अमृत दिसतोय. अरे बा तुम्ही इथून बट्ट्या लाविता का काय. निस्ता गिलास पुढं Brace yourself. अभी ये आपण हे अमृत प्राशन करू. यस भाई टीवी साउंड आ रहा, टीवी साउंड आ रहा. बाद बंद होगा 5-10 मिनट में बंद होगा, ठीक है? पान फाट मारे. हैं? अरे एक बोर्ड घेतला की डोकं कसं चढ पाहिजे. डुप्लिकेट माल आहे राव. अरे वो मराठी शो देख रहा मैं, मराठी शो. परिणाम थोडा सावकाश होतो. असं आहे का. नमस्कार वहिनी. 10 बजे हमारा टीवी बंद होता, मगर आज क्या हो गया, आज थोड़ा देर हो गया मतलब आने में, इसलिए तभी आज थोड़ा ज़्यादा देर तक चालू है. लगीनच झालेलं नाही तुमचं. तुम्ही पण बुवाच्या तावलादीचे आहात का काय. अरे धूत तुमच्या कसल्या मॉडेल आहेत राव इथं. एकापेक्षा एक. मराठी लैंग्वेज है वो, तुमच्या इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा. का काय. मी निघतो. तुम्हाला काही वाईट वंगाळ सवय असत्यान तर माझी पंचायत करण्या अगोदर मला इथून गेलं पाहिजे. अरे हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है. और हाँ आज आपको टाइम हो अगर तो अपन वीकली बॉस करेंगे. आज जो हमने बताया था हम आज वीकली बॉस करेंगे, जो भी हो. अभी ये इवेंट का मतलब ये चालू होने दो, इसका एक पेज पूरा होने दो, उसके बाद अपन वीकली बॉसेस पूरा करेंगे, ठीक है? आयो माफ करा. माफ करा. आप मेरे साथ आ जाओ फिर. तुमचं झालंय का लग्न. आओ आओ तुमचं झालंय का लग्न. झालंय. अगं बाबा मी इंद्राचा पाहुणा आहे या परिसरात नाव आहे. ठीक है चलो. माझ्याशी असं वाईट वागू नका. मेरे साथ प्रिमोजेम्स इस बार बहुत ज़्यादा है. बढ़िया यार. ब्लूम टी में लगता है ये. हाँ ठीक है. भाई अपने पास तो हीलर होना चाहिए, क्योंकि अपने पास तो कुछ हीलर नहीं है यार. इसमें फायरो नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, मगर हमें मजबूर में डालना पड़ रहा है. ठीक है कर लो यार. ठीक है दो. अरे तो अपने यार ये तो डालना ही पड़ेगा. आपली काय सेवा करू. आता मीच माझ्या तोंडाला काय सांगणार. जमल ते करा. लईच घाई केली मी लग्नाची. ठीक है. कुठं यो रंबेचा कुंभाळा आणि कुठं आमचं ते ढगाळ. कल के सोच भाई. काही नाही. आज्ञा करावी.
असलं काही ओके कोई ना झालंय का? नाही आमच्याकडे लग्न करायचंच नाही. Emerge right now. Let's light it up! Everybody stand back! Rain cutter! Right here. I'm always watching. Here you are. Surprise! Rain outlines your fate. Body and mind. I'm going in! Witness the power of Gugwa. Emerge. No, my sword! A process of elimination. Teamwork is dreamwork! Rain cutter! Right here. Emerge. Right here. A sight to behold. Emerge. Right now. Emerge. Witness the power of Gugwa. Let's light it up! Everybody stand back! Scatter! Rain outlines your fate. अब नेक्स्ट राउंड है हिलेचर पायरो हिलेचर पायरो है क्या तो आपने क्या करना होगा इलेक्ट्रो हाइड्रो ये तो अभी हीलर तो हो गया अपना देखिए इलेक्ट्रो हाइड्रो हो गया पायरो नहीं डालना पड़ेगा इस बार यार फिर ये डालना पड़ेगा फिर और रही बात एनेमो एक एनेमो कैरेक्टर तो होना चाहिए यार ठीक है चलो Time for takeoff. Right here. Right now. Emerge. I'm always watching. Ha! Right here. Think you can get away? No, my sword! Let me weave you a verse. Here we go! Yeah. Time for takeoff. Torrent, bring refuge! Show them. Come on out. A sight to behold. Witness the power of Gugwa. A little gliding. Think you can get away? Right now. Emerge. Right now. Emerge. Right now. Billowing surge! Nothing lasts forever. No, my sword! Rain cutter! Allow me! Time for takeoff. Uphill battle! Torrent, bring refuge! Show them. Right here. Emerge. A sight to behold. ये तो हो गया भाई
ये हो गया। ट्रेजर होल्डर्स इलेक्ट्रो है अपने पास इस बार। इलेक्ट्रो है तो अनेमो ये होना चाहिए। पायरो नहीं यार, ये कुछ इसको नहीं लेंगे अपन, इसको लेंगे ठीक है। और उसके बाद अपना पेन है, पेन तो होना चाहिए ठीक है। Happy to oblige. Another test Teamwork is dreamwork. Think you can get away? Following orders. Following orders. Yahoo! Let's light it up. Time for takeoff. Boba, get them! I'm going in! Squall and Fury. Following orders. Following orders. Wretched vermin. Think you can get away? Eat this! Teamwork is dreamwork! Fine. Fine. Target practice. You dare to gaze upon me? Target. Fine. Some target practice. Spread your wings. Time for and raise a takeoff. storm. Venture time. We've only just Going in! Nice and Where do you safe. think you're going? Fine. Some target practice. Spread your wings. Finally, some target practice. Spread your wings and raise a storm. can't run. Everybody stand Where do you back. think you're going? Think you can get away? Squall and Fury. Fine. Some target practice. Know your place. Fine. Some target practice. Finally, The wind some target rises. practice. Spread your wings and raise a storm. Fine. Some target practice. Spread your wings Bow your and raise head. a storm. चलो भाई, हो गया भाई, हो गया। सही है। आराम से ठीक है। तो अपने पास है अभी 303 प्रिमोजेम्स। चलो आ जाओ जल्दी। करेंगे अब साथ में वीकली बॉसेस। चलो करेंगे अब साथ में वीकली बॉसेस। काय झालं माझं कॉल। चलो भाई, अब क्या कौन आ सकता है मेरे यहाँ पर? जो आना चाहिए आ सकता है। अपन वीकली बॉसेस साथ में करेंगे अभी। एनीवन कैन जॉइन माय वर्ल्ड। तो हम साथ में अभी वीकली बॉस करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है। राज भाई हेलो, कैसे हो? जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम वीकली बॉसेस करेंगे। तो थंडर भाई हमारे आ रहे हैं अभी हमारी वर्ल्ड में। आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, मगर भाई आपकी लेवल बहुत कम है। कोई ना, आ जाओ। शुरुआत हम डिवालेंस से करेंगे, ठीक है? शुरुआत हम डिवालेंस से करेंगे। जो पहले आपने अनलॉक किया था उनसे शुरुआत करेंगे, ठीक है?
अपने पास कितना अनलॉक है? 90 नहीं यार, 80 तक है हमारे पास अनलॉक। जाने दो, कोई ना। और हाँ, उसके बाद अपन 4 पीस वीवी के लिए बिल्ड करेंगे, फार्म करेंगे 4 पीस वीवी के। मतलब मेरे पास ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है एलिमेंटेड मास्टर के। देखो HP एलिमेंटेड मास्टर भाई यार बहुत बेकार पीस है अपने पास फिलहाल तो। और करेंगे थोड़ा थोड़ा। एलिमेंटेड मास्टर बहुत सारे हैं मेरे पास। अटैक बहुत कम है, एलिमेंटेड मास्टर बहुत ज़्यादा है अभी। Right now. और बात रही अपनी दूसरा में तो है कि भाई इसको भी अपने उन्हें कैसे एक्शन करना है। हम तो अच्छे भाई, आप बताओ। हम तो अच्छे हैं। सुमित भाई हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। I wish I was sitting at the top of a tree, looking out over a meadow, cider in hand. अरे ठंडा ठंडा। ठीक है आ जाओ। तो जैसा कि हमने थंबनेल में दिखाया था, हम सच में अभी वीकली बॉसेस करेंगे। Silly chap. Benny's adventure team, assemble! अच्छा देख लो ठीक है चलो। अरे यार क्या हो गया? क्या माजरा है? ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? स्टॉर्म टेरर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार ये कोऑप नहीं लगता है, कोऑप में नहीं लगता है हमें। चंद यार ये अब चलो फिर, मैं तो अपने इस यहाँ पर जाते फिर। चलो वो नहीं तो ये सही। वहाँ का No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. कहाँ पर है वो? मुझे याद नहीं आ रहा अभी कहाँ पर था। ये रहा, एज दहा। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। अच्छा है, ग्रुप करते हो। ठीक है चलो। लेवल 90 बहुत बढ़िया। मगर हमारे सारे के सारे 70 यार, इनको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। बॉसेस से भी फाइट लेंगे अपन। Settle this now! Let me weave you a verse. I let my guard down. Adventure time. There is no atonement for 1,000-year pain! That's gonna hurt in the morning. भाई साहब Today, Light it up! you witness your reckoning! I'm going in! Yeah! Time to act.
enraged earth will not Vengeance, absolve let's you! light it up! भाई साहब ये बहुत डेंजर यार. You stand upon Body your and tomb, though you know it not. Rain outlines your fate. Come, experience an Adventure eon time. of suffering. Witness the power of good work. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. This is order. Stabilize. Let me have a go. I am outplayed. अबे यार नहीं. I'm going in. Why do they never miss? हो गया चलो. भाई हम कोई प्रो प्लेयर नहीं है. हम कोई प्रो प्लेयर नहीं है. हमें अभी तक खेलना नहीं आता ज़्यादा. हमें प्रो प्लेयर बनाकर शर्मिंदा मत कीजिए. वर्षी पुछली करें. अच्छा 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 ठीक है कोई नहीं भाई. चल फिर वो नहीं होता तो अपने एनी प्रीमोजेम्स टिप. तो आपको प्रीमोजेम्स टिप चाहिए तो फिर अभी ये नया इवेंट आया है. Where do you want to go next? If Out you'd of like to see farm. Liyue's Okay. tourist spots. Body and mind. ठीक है जो भी आपके ये स्टोरी क्वेस्ट बाकी है उसको पूरा करो. ठीक है टॉप अप नहीं. हम टॉप अप नहीं करते. देखो यार टॉप अप मत करो यार. गेम वाले कभी नहीं बताते कि नहीं का टॉप अप क्या करो. ये फ्री टू प्ले गेम है. इसमें टॉप अप नहीं किया तो भी चलता. कौन सा वाला जियो वाला या आर्क आनेमे वाला. ठीक है तो ये वर्ल्ड क्वेस्ट भी क्या करो वहाँ से भी अपने को ये मिल जाती मतलब प्रीमोजेंस मिल जाती. देखो यहाँ से भी प्रीमोजेंस मिल जाते. हाँ है ना. मगर मेरा काम में ही बताना भाई. आपको अगर पता हो या ना हो मेरा काम है आपको बताना. ठीक है अब भी है ट्रांसडोमेन गोल्डन हाउस चल रहा है. अपने टर्टाग्लिया से अभी वो नहीं 2v2 करेंगे अभी. टर्टाग्लिया आ गए हमारे थंडर. मुझे झोंगली चाहिए यार. झोंगली सारे के सारे आर्कॉन अगर हमारे पास हो तो बहुत बढ़िया यार. बहुत बढ़िया हो जाएगा. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Let's light it up. Passable effort. So quick Teamwork to is flee. dreamwork. Rain outlines your Cowering fate. already? I will have order. Not bad, not bad. Guess I should take you more seriously. पेट All you do is run. Everybody stand back.
Let me read you a verse. चलो हो गया भाई ये। अब इसका सिनेमैटिक हो जाएगा। Let's light it up. I'm going in. Take a rest. Leave it to me. This is order. Yeah. Let's light it up. Everybody stand back. चलो हो गया। टोटा लिया। ये भी मिल गया अपने पास। एक कौन है? गेम में पेट मुझे नहीं पता यार। पेट मतलब हाँ वो वाला। अभी वो एक इवेंट आता, ठीक है, एक इवेंट आता, उसमें अपने को वो पेट मिल जाता। इवेंट में अपने को वो पेट मिल जाता, ठीक है। अभी हमारे पास कितने पेट आपको दिखाता मैं। रुको एक बार, कहाँ पर है मेरे पास ज़्यादा पेट नहीं यार। Osmanthus wine tastes the same as I remember. ठीक है। But where are those who share the memory? देखो मेरे पास अभी फिलहाल तो यही है, क्लाउड रिटर्नर। एक क्लाउड रिटर्नर देखो, ये पंछी वाला, ये सिर्फ मेरे पास यही है फिलहाल, ठीक है। डोमेन ट्रंक डोमेन नार्कोमेन। चलो इसको मारेंगे अभी। चल आजा भाई, आजा स्ट्रीम देख रहे हैं तो गया जमीन में। देखो जमीन में आया। Stabilize. बिना किसी शील्डर के हम काम करते भाई, हमें किसी शील्ड की ज़रूरत नहीं है। सुमित ये वाला थोड़ा हार्ड होगा, वो तो पता है भाई, मगर आप हमारे साथ हो ना, तो हमें डरने की क्या बात है। You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Detestable. It's over. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Adventure time. Rain outlines your fate. Ring detestable. Off we go. Let's light it up. Everybody stand back. Adventure time. Know my sword. Teamwork is dreamwork. Off we go. Let's light it up. I'm going in. ये भी हो गया अभी। Rain outlines your fate. Dance, my pretties. Yeah. Let's light it up. Adventure time. Off we go. Time to act. Order guide you. Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. Cross over. Not even ashes will remain.
light it up! Everybody stand! No, my sword! Yeah! Time to act. Yeah! Embrace your Off we go. searing reckoning! Rain cutter! Not every wound will heal! I'm going in! This is order. Not good! Higher, Adventure time! Oh, Let me weave you a verse. Solidify. Time to act. Off we go! Adventure time! अबे भाई दिखता इतना आसान नहीं है Off we go! Teamwork is dreamwork! A minor setback. embrace your searing reckoning! Adventure time! Adventure time! I never asked for redemption. Never. चलो होगा भाई हो गया भाई साहब क्या वो भाई बहुत बवाल था ये बहुत बवाल था चलो हमने अभी पूरा कर लिया अभी ठीक है ये भी ऊपर हो गया Benny's adventure team, assemble! हो गया भाई अभी हो गया अभी वे प्राइज हाँ वे प्राइज Billy Charles, Billy चलो अभी बहुत क्या करेंगे अभी ये करने का अपन को अभी ये करने का है ठीक है चलो अंदर ये बहुत डेंजर है यार ये बहुत मतलब सबसे ज़्यादा ये डेंजर है ये भाई कोयलावर रुको उसके पास मत जाना 5 मिनट Solidify. कॉइन लगाता मैं तो लगा दिया Adventure time! Off we go! Stabilize. Going in! Strike Let's dead! light it up! I have taught you everything I know. Let's light it up! Absurd! The eye Everybody sweeps the stand land! back! Rain outlines your face. Be pathetic, weak! Let's light it up! Be gone! Teamwork is dreamwork! Gather. Witness the power of goodwill! Evasion is futile. We go! This body is eternal. Followed by blade. I Let's will light it up! Period. Everybody stand back! No, my soul! Perish. take a rank. Rain cutter! Teamwork is dreamwork! Witness
The final calamity. भाई साहब Could it break the curse? Purge all obstacles. Inferior. Perish. Time to act. Eternity is in my hands. भाई साहब I am outplayed. भाई साहब हम हार चुके हैं अभी। उसका डैमेज देखेंगे अभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Lightning, obey me. Weak, be gone. Pathetic. हो गया भाई साहब। हराना बहुत मुश्किल है यार, इसको हराना बहुत मुश्किल है। आपको न्यू कैरेक्टर मिल गया, कौन सा मिल गया भाई? आपको कौन सा न्यू कैरेक्टर मिल गया बता दो हमें। चलो अभी देखते हैं अपने पास कितने प्रीमोजेम्स बाकी हैं। ठीक है चलो लेट्स सी। मॉम स्टैग अभी हम 4 पीस भी निकालेंगे भाई अभी। चलो Solidify! Body and mind. Time to act. Pay your dues! No, my sword! Here we go! Going in! Witness the power of Guwa! This is order! Gather! Rain outlines your fate. Everybody stand back! Let me weave you a verse. I will have order! The citizens shine no longer. Let's light it up! You can't run from death.
स्टार्टिंग बोनस भाई बेकार पीस ही आ रही है, सारे के सारे बेकार क्यों मिल रहे हैं मुझे क्या मालूम है आज। Time to act. Body and mind. Adventure time. Pay your dues. No, my sword. Off we go. Teamwork is dreamwork. Rain cutter. Freeze! The wrong test subject. Prepare yourself. I'm going in. I got careless. Let me weave you a verse. I got careless. The wrong test subject. Time to act. Everybody stand Order back. guide you. भंगार पीस, ये भी भंगार पीस है। ये तो बहुत बेकार है यार, सारे के सारे बेकार पीस मिल रहे। क्या है कर रहे यार तुम, मज़ा उड़ा ले रहे हमारा। अच्छा एलिमेंटल मास्टरी वाला क्रिट डैमेज वाला पीस मिलेगा तो अच्छा लगता है, क्यों सही गाना Another test subject. Cross over. I'm going in. No, my sword. Ring cutter. I got careless. Let's light it up. I got careless. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Let's light it up. Time to act. ठीक है हो गया अपना। ये कैसा है, बेकार है, ये भी बेकार है, बेकार पीस मिल रहे। क्या यार अच्छे पीस क्यों नहीं मिलते क्या मालूम। Stabilize. मैं तो काजो के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ले लो भाई। Time to act. There you are. Another test subject. Here we go. I'm going in. Ring Solidify. cutter. अपने बेनते के लिए Body and mind. Have a little taste. Free. Time to go. Witness the power of Gugwa. Adventures. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Order guide you. Free. No, my soul. और हाँ आपको एक बता दो, आपकी होताओं के लिए आपका डैमेज कम होना ज़रूरी है। मतलब आपका क्या बोलते हैं इसको, आपकी हेल्थ कम होना ज़रूरी है। जैसे आज फुल हेल्थ में उसको निकालोगे, मतलब उससे डैमेज लेने का कोशिश करोगे
तो कुछ काम करे फिर यार। ये तो पूरा का पूरा, हाँ उसके एचपी सारे के सारे एचपी निकल गए यार। ख़त्म अपने कंटेंट रीजन। चलो भाई ख़त्म अपना रोज़ का रूटीन ख़त्म अभी। हाँ हिल तो हो जा रहे हो आप। आपके देखो आपके ये हो जा रही है भाई। ओ हमारे बेनेट की वजह से हील हो जा रही है भाई साहब। वेपन तो बहुत अच्छा आपके पास। रुको ग्राफिक में इसको यहाँ पर कर लेता। हाँ अब दिखाई देगा। थैंक यू क्यों? हमें क्यों थैंक यू? हमें तो आपके लिए थैंक यू बोलना चाहिए था। चलो ये तो हो गया भाई। When the अब हम sun's क्या out, करेंगे? bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. हाँ हाँ वो तो पता है मुझे। अच्छा है। जितने तुम्हारी मतलब ये क्या बोलते हो होता हो कि जितने एचपी कम होगी वो ज़्यादा डैमेज देती है मेरे हिसाब से। Toodaloo. चलो भाई साहब वही अपने पास 1300 आई थिंक 13 प्रीमोजेम्स है अभी। तो हमारा बचा हुआ क्वेस्ट पूरा करेंगे अभी। ठीक है। Silly churl, Billy churl, चलो। silly Billy, hilly churl. Ooh. चलो गुड बाय भाई। चलो अबे हमें बचा हुआ। Oh my goodness. यस Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. सरप्राइज। गेमिंग स्ट्रीट आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ ये बात कहूँ, हमने अब स्ट्रीमिंग चालू करने के आधे मतलब 15-20 मिनट के बाद ही हमने सारे के सारे वर्ल्ड बॉसेस से फाइट करी है और ये फाइट पूरी हो चुकी है अभी। तो टाइम मिला तो हमने ये क्या करा कि नहीं का यहाँ पर इस डोमेन में अपने बेनती के लिए 4 पीस भी निकाला, मगर वो सारे के सारे आर्टिफैक्ट बेकार निकले। हमारा बैड लक। मैं नहीं खाऊंगा तो कौन आएगा? आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा भाई? वो तो सही है। देखो डिफेंड एलिमेंटल मास्टर नहीं देता है यार। मेरा साउंड लो आ रहा है क्या? ठीक है इसका साउंड कम कर लेते हैं। अब आएगा। माइक थोड़ा नीचे गया था हमारा। ठीक है अब आएगा आपको हमारा आवाज़ अच्छी तरीके से। अब आ रहा है क्या आवाज़? क्रिट डैमेज। ये बेकार पीस है, ये भी बेकार है। ये अच्छा है पीस है यार। ये नहीं ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। अच्छा है, अच्छा वाले कौन से नहीं चाहिए मेरे को तो। हाँ अभी ठीक है। साले मारने के मिल गए भाई। मारने के तो फिर हाँ रुको। तो माइडन के हम किसको लगा सकते हैं? माइडन के हम इसको लगाएंगे
ऑफिस में आइडन इसको लगाएंगे, नहीं तो ऑफिस इसको लगाएंगे। सपोर्ट है भाई, वेंटी सपोर्ट है। एम फुल एम बिल्ड है उसका, फुल एम बिल्ड है उसका। HP 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 ये भी HP फीलिंग कौन, ठीक है। फोपिस HP इसको लगा दिया हमने। हाँ सभी पीस में एम ही देंगे। ये देखो सारे के सारे पीसेस में हमने एम ही दिया है। अटैक, एलिमेंटल मैस्ट्री, अटैक। यहाँ पर एलिमेंटल मैस्ट्री का नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पर ये देखो अभी ये है अभी एलिमेंटल मैस्ट्री वाला, मगर टेनेसिटी मेरे लिख का है, ठीक है। इसको ये एलिमेंटल मैस्ट्री है मेरे पास। फोपिस वीवी वाला एलिमेंटल मैस्ट्री वाला कौन सा भी ये नहीं अभी सर्कुलेट, क्या बोलते हैं उसको, और सर्कुलेट कौन सा भी EM वाला सर्कुलेट नाम अपने पास नहीं है। ये हमारी दुर्दशा है अभी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर अटैक को यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि उसके सब स्टैट्स देखो, सब स्टैट्स एलिमेंटल मैस्ट्री 15, इसकी क्रिट रेट 2.2 है, अटैक और डिफेंड, इसलिए हमको इस पर वीवी लगाया, ठीक है। और 72 है इसके ऊपर एनर्जी रिचार्ज है, एनिमल डैमेज बोनस है, तो यहाँ पर हम एनिमल डैमेज बोनस लगाएंगे। फोपिस वीवी चाहिए विनती पर, हाँ यस फोपिस वीवी तो चाहिए। एलिमेंटल मैस्ट्री डिफेंड पर क्रिटेड डैमेज, भंगार पीस यार मगर ये वाला अच्छा है एनिमल डैमेज बोनस के लिए, मगर हमारे पास एलिमेंटल मैस्ट्री होना चाहिए था, मगर फिलहाल तो यही है। इसको बढ़ाएंगे, अगर इसकी एलिमेंटल मैस्ट्री बढ़ती है तो हमारे लिए अच्छा है। अरे यार डिफेंड बढ़ गया, बेकार है। बेकार पीस हो गए, छोड़ दो इसको। DPS नहीं हमारा बेनती, चलो अभी तो हो गया। तो बचा कुछ अपना ये स्टोरी क्वेस्ट पूरा करेंगे अभी, ठीक है। बचा हुआ स्टोरी क्वेस्ट फ्री 60 प्रिमोजेम्स के लिए। काय झालं रे? चलो जैसे हमने कहा था। Well, the peace talks are upon us. How do you feel? Prepared? क्या टूटा? क्या कुछ नहीं टूटा भाई, बर्तन गिरा नीचे। कुछ नहीं टूटा। कुछ नहीं टूटा। Here, take this. These are some directives I wrote last night. These negotiations are complex to be sure, but I thought about it carefully and realized there are no more than 187 possible outcomes. भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया, मतलब ये अच्छी एक क्या बोल रहे थे हम, कल हम जेसी से बात कर रहे थे, ठीक है, थंडर भाई और गेमिंग स्ट्रीट गेमिंग भाई। तो हम जेसी से कल, जेसी नाम का एक ब्रदर है हमारा, जानत क्या मालूम,
अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता, तो उससे बात कर रहा था मैं इस क्वेस्ट के बारे में। उसको मतलब मेरा ये क्वेस्ट चालू, देखो कि आपको बाहर जाकर बोलता हूँ, मेरे को घर के बाहर जाकर बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इस क्वेस्ट के बारे में जेसी ब्रदर से। जेसी जो अपना मेंबर है डिस्कॉर्ड सर्वर का, तो उससे मैं इस क्वेस्ट के बारे में बता रहा था कि हाँ डीसी भाई, डीसी पे देखा था। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं कि उससे मतलब उसको मेरा वो स्ट्रीम क्यों पसंद आता, वो मेरी स्ट्रीम देखने क्यों आता, उससे पूछा मैंने। तो बता रहा था कि नहीं, आप जब स्टोरी चलाते हो, जो भी अपना मतलब स्टोरी खेलते हो, तब अपन जो बात करते हो मेरे साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जो बात करते हो, उसी वजह से मैं आपसे जुड़ा था। तो फिर मैं अभी आप दोनों से पूछना चाहूँगा, गेमिंग स्ट्रीट और सुमित भाई से, या फिर थंडर भाई, दोनों ही। तो आपसे एक पूछना चाहूँगा कि नहीं का मेरी स्ट्रीम आपको देखने में क्यों पसंद आती है, और आप किस वजह से आते हो। सपोर्ट तो है, मगर क्या अच्छा लगता है मुझ में, मतलब देखने में कि यार ये बंदा अच्छा आगे जा रहा है, ये इसकी वजह से, या मेरा मतलब बर्ताव अच्छा है इसकी वजह से। क्या आपका ओपिनियन है, जल्दी से बताओ। You will be able to adapt with speed, no matter how the events play out. Whoa, this is huge! Let's see. Fierce dispute, violent escalation, armed revolt, coordinated attack, seize hostages. Wow, there are so many! But you've thought of a solution to each one! Hyman suddenly feels a lot less nervous. Glad to hear it. These peace talks are quite exceptional. It is a major step forward both for Watatsumi Island and the Shogunate. But any amount of dissatisfaction within our ranks weakens our negotiating position. We will have to work all the harder if we want these talks to be a success. As the Divine Priestess of Watatsumi Island, this responsibility is, of course, mine to shoulder. But would you be willing to lend me a hand? I want everyone to know if there is a not one support them, I am support. भाई साहब, ये बात आज बहुत मतलब ओके, थैंक यू। तो आपको सपोर्ट करना अच्छा लगता है, कि जो अभी ग्रो अप कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना अच्छा लगता है। अच्छा, ये बात है क्या। तो भाई अब सुमित भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारी मतलब स्ट्रीम में पहले तो आके पे मज़ा आता है, कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं है। मैं तो गेमिंग स्ट्रीट भाई सपोर्ट करने के लिए। अच्छा Excellent. Okay, time to head off. तो ये बात रही आपकी, मगर जेसी भाई को हमारा मतलब स्ट्रीम चालू होते समय जो स्टोरी है उसके बारे में और ज़्यादा प्रैक्टिकल बोलते, मतलब ज़िंदगी के बारे, मतलब जो भी अच्छा भला बुरा, मतलब जो भी इंटरटेनमेंट करते हैं उनको, तो उनको वो पसंद आता। मतलब स्टोरी बताते समय में उस स्टोरी को अपनी लाइफ से कैसे जुड़े, मतलब ये स्टोरी मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता मैं, तो उनको वो पसंद आता कि स्टोरी देखते समय वो उसको एक्सप्लेन भी करते और हमसे बातें भी करते। उनको बातें सुनना बहुत पसंद है मेरी, तो वो मेरे स्ट्रीम देखने के लिए इसीलिए आते। भाई साहब इधर कहाँ जा रहे हैं, ये तो बहुत दूर है भाई। अच्छा, तो आपको भी मज़ा आता है। थैंक यू। आपको अगर मज़ा आता हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में किसको किसी के लिए टाइम नहीं मिलता भाई, ये तो आपको पता है।
इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं मिलता। ओके, थैंक यू। तो आप सभी ने मुझे इस लायक समझा है, ग्लैड टू हियर इट। Time for takeoff. No, my sword. Rain cutter. I'm going in. Motion to compel. Time for your arraignment. Let's play. Time to act. Rain outlines your fate. Get out of here. Boom boom. ठीक है, खत्म हो गया उसका काम। हिमांशु भाई कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम हिमांशु भाई। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो वी हैव ऑलरेडी Think you can get away? Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Witness the power of Kuwa! Here we go! Motion to compel! हिमांशु भाई कैसे हो आप? एक बार बता दो। और बात रही हमने जो थंबनेल रखा था, तो वीकली बॉस हम पहले ही पूरे कर चुके हैं, आप मिस कर चुके हैं अभी। भाई साहब, अब ये कन्वर्सेशन सुनो। अभी ये लास्ट वाला लगता है, जैसा कि हमारे जेसी ब्रदर ने बताया था और हमारे थंडर ब्रदर ने। It's been a while, Kujo-Sara. I believe the last time we met was on the battlefield. Yes, where you dealt my forces quite the devastating blow. आगे भाई कुजो-सारा भाई, अब ये लास्ट मोमेंट है, तो उसके बाद अपन ईटो का क्वेस्ट करेंगे, ठीक है? मैंने ऐसा सुना है कि ईटो का क्वेस्ट बहुत इमोशनल है, ठीक है? ईटो का क्वेस्ट बहुत इमोशनल है, मतलब उसका क्या होता है क्या मालूम, अभी तक हमें पता नहीं, हम पहली बार करने वाले हैं अभी उसको। But before we go any further, what are you doing here? That's right. He's here to bear witness to the proceedings. He experienced the war between us firsthand and has made an enormous contribution towards securing the peace we have today. I couldn't think of a more suitable candidate. Seems reasonable. Then let's get straight into it. The first item is the Maritime Administration issue. During wartime, we restricted fishing rights for Watatsumi vessels in Narukami waters. We intend to remove these restrictions, but going forward, any of your vessels that fish in our waters will have to pay taxes in accordance with Narukami legislation in order to bring their catch back to Watatsumi. That's fine, but if they're paying taxes, they should also be entitled to protection from the Tenryou Commission while in your waters. Any losses they sustain due to issues of public security will need to be compensated by the Tenryou Commission. ये कौन सा कम है, मतलब ये कौन सा क्वेस्ट है, ये बताना चाहूँगा, ठीक है? ये सांगोनो में कोकोमी का स्टोरी क्वेस्ट है, कोकोमी का मतलब स्टोरी क्वेस्ट है, एक्ट 1, ठीक है? एक्ट 1 है ये।
उसके बाद अपन ईटो का क्वेस्ट करेंगे। Accepted. Let's add that to the peace treaty. I can assure you that your vessels will be quite safe in our hands. अगर वो अनलॉक होगा तो कौन सा क्वेस्ट? ठीक है, क्वेस्ट हम ईटो का क्वेस्ट मतलब स्टोरी क्वेस्ट करेंगे। स्टोरी क्वेस्ट Negotiations seem to be going pretty smoothly. The next item has to do with the movement of people and military authority. ईटो का ईटो। In the past, our people have been subjected to lengthy interrogations on arrival in Watatsumi, and the same has been true for your people on arrival to Narukami. Economic cooperation between our islands has suffered greatly as a consequence. Few merchants are now willing to engage in inter-island commerce. Since the war is now over, I propose that we have the Yashiro Commission appoint a business council to oversee trade between our two islands. The problem there is that trade is a reciprocal affair. We'll need to involve merchants from both sides in this process if it is to succeed. We cannot give the Yashiro Commission full authority. Correct me if I'm wrong, but isn't Watatsumi Island facing severe shortages of many essential goods at the moment? Having the Yashiro Commission organize everything centrally would work in your favor. True, we're experiencing some shortages, but we will recover in due course. Between the diverse range of goods we can produce ourselves and our strong trade links with other areas, we are capable of sourcing everything we need. Not to mention that your proposal would require separate talks with the Kamisato clan. If they've yet to sanction it, I believe you are going beyond the remit of the Tenryou Commission's authority. Let's leave that aside for now then. On to the military question. Watatsumi Island's forces will need to come back under the jurisdiction of the Tenryou Commission. That just isn't feasible. Not in the short term, at least. With all due respect, feasibility doesn't come into it. The Tenryou Commission alone has ultimate responsibility for Inazuma's national security. We cannot allow Watatsumi Island to be the sole exception to this rule indefinitely. You Kujo scum! Colluding with the Fatui isn't low enough for you already. You just want to take everything away from us. Comrades, never trust the Kujo. Let's get them. Protect Madame Kujo. Number 16. No, wait. 67? Or is it 73? Which one is it? क्या हो गया था भाई? समझ में नहीं आया मुझे भी। Which scenario number is this in the directives? The last one. But hold off for the moment. Stand down, Tadakatsu. Situation has changed. Please stand by for further orders. Rest assured, I am fully aware of your concerns, but I will deal with the situation from here. Madam Kujo, this is rather serious. I believe you owe Watatsumi Island an explanation. Excuse me for a moment. Nobody makes another move until I have finished investigating. You two, here, now! अरे भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। Speak! Collusion with the Fatui? Is this true? I wouldn't exactly call it collusion as such. We were approached by a few Fatui. They mentioned a potential cooperation to keep the war against Watatsumi Island going. ट्रैवलर और कोकोमी के बारे में, मतलब कोकोमी के कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है भाई। कोकोमी का कुछ ना कुछ तो प्लान होगा भाई।
देखेंगे अब कौन सा प्लान होगा. At the time, I felt like we could give it a try. After all, there'd be nothing to lose. But we were extremely careful. We didn't agree to anything. We just said they could maybe start by heading to Watatsumi Island and stirring things up a little. Then we'd see how it went. With respect, ma'am, there was no collusion. It was just a one-off conversation. How anyone from Watatsumi Island even found out about it, I have no idea. That's enough. When we return, there will be consequences. Might I remind you that this is the Fatui? Have you completely forgotten what they did to us? You should be having no interaction with them whatsoever, let alone entertaining offers of cooperation. So, what did they want out of it? The Fatui's main forces have already left Inazuma. The few who approached us seemed like they wanted to settle a score for their boss. Oh, her subordinates. So they're out for revenge. They want to keep Inazuma in a state of turmoil. भाई साहब, फतोही मुझे पता है भाई. फतोही यहाँ पूरे के पूरे फतोही हार्बिंजर सब कुछ. मतलब वो चाइल्ड भी है और उसके बाद हो गई वो जिसका भी मतलब ट्रांस डोमेन में जो वीकली बॉसेस में आती वो स्नेजनाया. हाँ, स्नेजनाया. तो वो भी सारे के सारे फतोही है. One day, I will hunt them down. Every last one. We bear responsibility for this issue. My sincere apologies. I have my own negligence to blame for this state of affairs. Please, grant us another chance to continue the peace talks. स्कार मुझे भी है, मगर उसका क्वेस्ट बहुत दूर है भाई. मेरे से भी बहुत दूर है. मतलब स्टोरी आर्कॉन क्वेस्ट होगा उसका, जो अब हम अराइव हो चुके हैं अभी समर में. तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में अभी जैसे जमता है वैसे. But of course, Madam Kujo, I have every confidence in your ability to resolve this situation. For the time being, however, there is evidently some discord within the Tenryou Commission's ranks. I would therefore not feel comfortable releasing Watatsumi Island's forces into your command at this time. It seems that I must acquiesce. I will lay this issue aside for now. But we shall revisit it as soon as the Tenryou Commission has resolved our internal issues. As for the trade issues we raised, I will discuss options with the Yashiro Commission and make sure both sides have ample participation in the final arrangement. Seems like Kujo-sara's on the defensive now. These negotiations should be smooth sailing from here on out. I never knew the grand strategist of Watatsumi Island was a skilled negotiator, as well as a formidable commander. I hope that when we meet again, we can continue these sit-down discussions. Settling our differences on the battlefield is rather taxing. I think we can leave things there for today. Once I get back, I will conduct a thorough investigation into the Tenryou Commission's internal issues. I recommend. I will bear this in mind. Thank you. I shall take my leave now. Until we meet again. Your Excellency, we... Let's discuss it after we get back. ऑन कर देंगे बाद वाले. क्वेश्चन मैं सब फोन करूँगा. Your Excellency, you knew? I have already been informed on the reasons for your actions. You believe the Tenryou Commission to be untrustworthy and sought to sabotage the peace talks and reignite the war. Fortunately,
The end result exposed and thwarted a secret Tenryou Commission plot. Yet, this was purely incidental, and the end certainly did not justify your means. But Your Excellency, so many comrades have sacrificed themselves in the line of duty. If we stop now, aren't all of our efforts going to waste? I want to keep fighting. I want ultimate victory, even if it means I have to pay the ultimate price. I understand your sentiments, but you cannot simply impose your will and expect others to bear the consequences. During the war, there were highs and there were lows, and in the end, there was a glorious victory. For you, perhaps the experience was one of great excitement, but you saw nothing of the countless others who will remember the war quite differently. Most people suffered terribly through each day. Watatsumi Island's people yearn for peace because they have long since given all they had to the war effort. They are tired of treading water, and don't need you dragging them back underneath once again. But... I understand, I do. And the fault is not yours alone. It was largely an oversight on my part. I taught you to nurture a warrior's will, but never how to let it go. It's not your fault, Your Excellency. It was ours. Our selfishness. Either way, we are ready to accept sentencing under martial law. Very well. Then I hereby declare... that as of today, I am founding a new secret corps of the army. This division will be responsible for keeping Watatsumi Island safe and secure, neutralizing any and all threats to the peace of our island. You and your comrades will all be welcome to join, but be warned, the training will be grueling. Perseverance and grit will be in high demand. Your Excellency, what are you saying? I have concluded from today's peace talks that the Kujo clan cannot achieve absolute peace and stability in the near future. Many seek peace, but there are still those who pursue war. It is right that Watatsumi Island moves towards peace, but we must still retain a defensive capacity. Those whose warrior's will is alive and well, I invite you to embark on the most challenging training regimen of your lives. I don't want to hear from any of you again until all of you can take on 2 shogunate samurai at a time. Thank you, Your Excellency. All right, dismissed. Go and report to General Goro. And remember, there can be no more insubordination. And if there is, there will be no more leniency from me, whatever reasons you may have. Yes, ma'am. From now on, we will focus on our training. Thank you for this opportunity, Your Excellency. We'll report to General Goro right away. I think that's finally everything in hand. I can feel my energy levels starting to drop. Meet you back at the hideout for some rest? ओके तो यहाँ पर एंड हो जाएगा. Thank you for everything. With your help, peace has been restored on Watatsumi Island once more. हाँ पता है Recovering. देखेंगे अभी. Slowly. उसका पूरा बुक देखेंगे अभी. I should be raring to go before too long. Today was a reminder that I don't cope well in situations with lots of people. I've improved, but I still get nervous when more than a handful of people are involved. I think I might get Goro to handle the negotiations next time. Do you think so? To be honest, I'm still a long way off what's expected of a divine priestess.
In the past, I was concerned only with winning the war, restoring peace, and making sure everyone could live a happy life. But I realize now that wasn't going far enough. People have all kinds of aspirations, and just as many measures of happiness. I have a long way to go, but that's okay. If I can't make the journey in one giant leap, I'll just have to settle for taking it one small step at a time. In short, I've still got some maturing to do. Could you stay here on Watatsumi Island? To keep me company for a while longer? Terus Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. नहीं भाई, यहाँ पर कोई बुक्स नहीं है उसके हाइडआउट में। करेंगे, वो भी करेंगे भाई। ओके, Beetle battle. Hi, Catherine. It's us. Was there something we could help with? Yes. I'm afraid that I have another task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly from the Tenryou Commission. The assignment is both urgent and dangerous. After assessing the assignment, the Guild has concluded that seasoned adventurers are required. Naturally, you came to mind. Just another day on the job for us! Allow me to explain. The Tenryou Commission recently issued an arrest warrant for a young Oni by the name of Arataki Ito. Oni? You mean those big, tough-looking guys with horns on their heads? That's correct. This particular Oni is quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation on the streets. That said, he has never been caught up in major trouble of any kind. So it came as a surprise to learn that he has recently been accused of stealing things, and sometimes even whisking away the people themselves. But it doesn't end there. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin before making a getaway with his accomplices. So let Paimon guess. It's up to us to bring this Oni in. No problemo. This does sound like a job for the Traveler. He'll be back with that Oni in no time. I have complete confidence you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision, and is the leader of an organization known as the Arataki Gang. On second thought, Paimon will leave the fighting to you. The last place Paimon wants to be is in a gang fight. We are still investigating Arataki Ito's potential motives behind these incidents, as well as his current whereabouts. But please ask around in the streets as well. There will likely be others more familiar with Ito's circumstances than I am, who can provide you with useful information. Thank you. I will await your return.
Ad Astra Abyssosque. Ad Astra Abyssosque. Well, let's start asking around on the streets. Hopefully we'll learn a little more about this Arataki Ito guy and figure out where he might have run off to. Arataki Ito? Yeah, I've heard of the guy. Word is, he did something monumentally stupid, then ran off before they could catch him. And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Okay, well, I mean, not that surprised. Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very overbearing in everything he does. Big and brash and always making a ruckus. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. When he's in a good mood, he's as high as a kite. But when he gets upset, he gets completely enraged. I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. थोड़ा पानी पीने का था? कोको मैची तो ऐसे कैज़म वाला किया था कैज़म वाला इवेंट किया था मैंने You know, I'm afraid that I'm not too sure myself. I keep a pretty good eye on what's happening in the city, and as far as I can tell, he just idles the days away. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just out making a scene with the kids on the street or his gang. If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic to make ends meet. Is it just Paimon, or is this Ito fellow starting to sound pretty weird? I'm afraid that I don't have much else to tell you. He tends to spend his time with people a little more lively than myself. Perhaps you could try asking around some more. Okay, thanks. Those two look familiar. Ah, it's Ippei and Shinojo! Guess they must be good friends, huh? Anyway, let's go say hi. Hi, Ippei. Hi, Shinojo. What are you guys doing here? Oh, it's you. Thanks so much for your help last time. ayaka. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last time. I've never had the chance to say thank you properly. What about you? How do you know them? Also a chance encounter. Our lady had them join us as additional guards for a goods escort in order to sneak out of Rito undetected. So we all know each other, huh? What a coincidence. Not exactly. We've only just met. We both came here to order some clothes and got to chatting. Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay to talk about that, right? It's probably fine. They've known about it for a long time already. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. In fact, that was why Chisato wanted us to deliver a letter. That's old news, though. So why has it come up now? Are they taking the next step or something? We have reason to suspect that they'll be getting married soon. खबर गई भाई यूला. Wow, that's great! They can finally make it official! Of course, this is just personal speculation. They haven't announced anything, and we wouldn't dare to ask. I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. Turns out that Ippei received the exact same instructions as I did.
They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery normally reserved for big festivals. It's hard not to put two and two together. Lady Hiragi has been in high spirits recently, and I heard she's on a diet as well. Surely it's all for the wedding. This is wonderful news! But, What's wrong? Oh, don't mind me. She's about to be happily married to the love of her life. I genuinely couldn't be happier for her. Right? I think so too. It's fantastic. Yes, but we shouldn't let ourselves get overexcited. What if it's all a big misunderstanding? As things stand, we have no actual proof of a wedding. Now, if they sent me out to deliver wedding invitations, that would be a different story. Shinoju doesn't look like he's taking this very well at all. Sorry, I just haven't slept well recently. I'm ashamed to be so out of sorts at work. I'm not living up to my responsibilities, either to the Kanjo Commission or to my lady. Are you worried about their wedding? Not exactly. It's just everything feels kind of up in the air until they make it official. तो तुम दोनों ही बातें कर रहे हैं आपसे. ठीक है, मेरा नाम लेकर बातें करो फिर. अगर मुझसे बातें करना चाहते हो तो. ज़्यादा स्पैम करोगे तो ये नाइट बॉट वार्निंग तो देगा भाई. I get what you mean. I really do. We need this wedding to be set in stone before the celebrations can really begin. ठीक है कोई ना. चलेगा चलेगा. भाई कभी कभी नाइट बॉट मतलब वो सस्ते नशे कर लेता. What should we do? Should we just straight up ask them? I don't know. That seems a bit rude. Right! If Ayaka knows about it, that means it's a sure thing. कभी कभी क्या होता है यार, मुझे नहीं पता ये नाइट बॉट क्या ऐसा क्यों करता. मुझे भी नहीं पता अभी तक. अपने स्ट्रीट गेमिंग से बात करना चाहूँगा कि अभी मैं देखो कभी कभी ये नाइट बोर्ड कैसा क्या मालूम यार, मुझे नहीं पता अभी तक. मगर स्ट्रीट भाई से अभी बात करना चाहूँगा मैं कि अभी काजुआ तो नहीं निकालूँगा मैं. पहले मुझे नहिदा निकालनी है भाई. नहिदा किसी भी हालत में मुझे निकालनी है. नहिदा चाहिए मुझे, क्योंकि नहिदा इज़ द बेस्ट डेंद्रो कैरेक्टर. ठीक है, उसके लिए भाई अपन पुल करने वाले हैं. अगर वो नहीं निकली तो फुल अपना ये ट्रैवलर को फुल बिल्ड करेंगे फिर ओनली डेंद्रो के लिए. I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission about this. It's fine. He and Ayaka are practically best buds. There's nothing to worry about. I see. Then thank you. Thank you very much. Having a definite answer will stop my thoughts from running wild. Let's go to the Kamisatsu estate. नहिदा के लिए पुल करने वाले थे, मगर हम अभी क्या हो गया भाई. Arataki Ito? Oh yeah. I heard about that whole thing. I'm sure it must have been a mix-up on the Tenryou Commission's end. He could never do anything so dastardly. अपने
sure. भाई अपने ये Is he दिखाओ really as फिर। trustworthy as all that? सुमित भाई को दो भाई, सुमित भाई। अरे भाई साहब बहुत लकी हो यार तुम, हमें नहीं मिली मगर। No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything dastardly, I meant he literally doesn't have what it takes. Maybe a story will explain it better. So, he used to spend a lot of time playing rock, paper, scissors and hide and seek with the kids on the streets. Kids, being kids, aren't exactly the most difficult to outsmart. I'm sure you can see what I'm getting at here. He used to lose all the time, sometimes catastrophically. On purpose, though, right? No, not at all. The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, "I won! I finally won! I'm unbeatable!" And so on. ए यार कम है, अरे यार मुझसे मजाक मत किया करो यार। सुमित भाई आपसे तो मतलब आपसे ये उम्मीद नहीं थी मेरी, ठीक है सुमित भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि आपका लेवल 19 है। देखा देखा देखा, झूठ बोलते हैं यार। 55 57, हाँ ये कम है बोले। अरे हमारा तो अभी तक 45 के ऊपर भी नहीं गया अभी तक। Then he took the kid's candy as his prize and ate it right there in front of him. Ugh, that's just plain wrong. He did take it way too far that time. The poor kid started crying, so I stepped in and gave Ito a scolding. He was pretty quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing and playing again as if nothing had ever happened. In fact, the children quite like playing with him because he's always serious about the stakes and never throws a game on purpose. So, I suppose what I'm trying to say is a guy who can't even beat kids at a children's game really going to be capable of these kinds of diabolical deeds? Huh. He doesn't sound like a bad guy at all. In fact, he kind of sounds like a man of integrity. Yes, my thoughts exactly. Still, the Tenryou Commission's evidence against him is supposed to be irrefutable. So, I'm not trying to condone his actions or anything. If he really has messed up big time, then he should face the consequences just like anyone else. संतनु था। Thanks for the info. We'll keep asking around. ठीक है, संतनु देखेंगे। ये संतनु बढ़िया है, बढ़िया। सुमित भाई आपको भी मतलब पोपट बनाया इन्होंने। 59 है इनका। ये देखो, कहाँ तो विट से ग्रेट डैमेज। अच्छा है, होप इज डीप वुड। हाँ हम आपको पोपट बनाएंगे। ग्रेट रेट किट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी, बहुत बढ़िया। इसको एलिमेंटल मास्टरी वाला चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। मगर तुमने एक ब्लिजार्ड का क्यों लगाया भाई? ये भी अच्छा है, ये अच्छा स्टैट्स है इसके। जब पहली बार आया था तब लिया था। अच्छा, क्रिट डैमेज, अच्छा एलिमेंटल मास्टरी। इसको एलिमेंटल मास्टरी की बहुत ज़रूरत है। अरे यार क्या पागल है यार तुम। एनर्जी रिचार्ज भाई साहब, बहुत बढ़िया स्टैट मिले तुमको यार। एलिमेंटल मास्टरी, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एक नंबर स्टैट से। क्रिट रेट, क्रिट डैमेज 25 बहुत सारा एलिमेंटल मास्टरी आपके पास। कॉन्सलेशन 0, टैलेंट 9, 10, 9।
बहुत बढ़िया खेलते हो यार तुम। 70793193 बहुत बढ़िया है। हाँ, बाकी कैरेक्टर भी देखेंगे। 160 नहीं 260 डीपीएस नहीं था। हाँ डीपीएस नहीं था यार, ये देखो देखो डीपीएस नहीं, देंद्रो डैमेज बोनस देखो। ईएम वाले नहीं है ये, फुल ईएम वाले नहीं है ये, फुल डीपीएस है। पॉपिस ब्लिजार्ड बहुत बढ़िया। क्रिट डैमेज 28 एक नंबर यार, एक नंबर। 33.4 अरे भाई साहब ये वो ज़्यादा हो गया। 33.4 हाईएस्ट 100 के हम भी पहुँचेंगे। रुको 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 ज़रा सब्र करो, रुको ज़रा सब्र करो, हम भी आपके पास पहुँचेंगे थोड़ा थोड़ा। तो तुम स्ट्रीट भाई अपना मतलब शोकेस क्यों नहीं बना देते? मतलब वीडियो बनाओ, शॉर्ट्स डालो यूट्यूब पे, इतना खेलते हो अच्छा तो। क्रिटेड के डैमेज 21% क्रिट डैमेज, क्रिट डैमेज बहुत बढ़िया। हाँ नहीं देखिए 100 के बहुत है। कॉन्सलेशन 0 टैलेंट्स 10 ट्रिपल क्राउन है भाई, ट्रिपल क्राउन एक नंबर है। ट्रिपल क्राउन है इनका वेपन में। अरे वाह 5 स्टार है। आप पे टू विन है। हम 10,000 के भी नहीं जाती। अरे यार ऐसी कैसी बात है फिर। जंगली एक शो तो मैं करता था। अरे भाई सब्सक्राइबर्स फाइन बहुत बढ़िया ये। R1 वाली R1 वाली ओनली गाइड वीडियो है आपके पास? हाँ ट्रेन सिटी में दिखे। अच्छा ये एनर्जी रिचार्ज, क्रिट रेट के डैमेज, डिफेंड क्रिट रेट के डैमेज, डिफेंड अच्छा इसका। अरे भाई साहब एलिमेंटल मास्टरी, क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज, क्रिट रेट। भाई साहब ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया मिला आपको ये वाला। 40,000 HP वाला भाई ये, देखो ना तुम 40,000 HP वाला ये। यहाँ पर 30.4% HP परसेंटेज है इनके पास। 50.2% यहाँ पर भी HP है। ये देखो ये 46.6% है भाई, परसेंट। F2P है क्या? हमको यार ये समझेगा तुमने। F2P नहीं होंगे फिर तो। 1099 क्राउन है। ये सपोर्ट है भाई, ये तो सपोर्ट दिख रहा मुझे। शील्डर गन का ये सपोर्ट डिपेज दिख रहा मुझे ये। अरे बाप, सिग्नेचर वेपन, ऑफिस एम्बलम ऑफ इट। ये क्या कर रहा है इधर? अच्छा है मगर ये क्रिट रेट के डैमेज, अच्छा HP अटैक, एलिमेंटल मैच। राइडन डीपीएस से मगर मुझे इसका क्रिट डैमेज देख कर देखो। डीपीएस राइडन मगर इसका क्रिट डैमेज इतना अच्छा क्यों नहीं है भाई? डीपीएस राइडर नहीं मुझे पता है, मगर कुछ लोग तो उसको एज अ सब डीपीएस
ले लेते हैं, ठीक है। अच्छे स्टैट्स है इसके। और यार देखेंगे एनर्जी रिचार्ज, एनर्जी रिचार्ज। अरे भाई साहब एनर्जी रिचार्ज 268, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? उसको एनर्जी रिचार्ज चाहिए क्योंकि उसका बर्स्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है। देखो देखो, इसका बर्स्ट बहुत एनर्जी रहता है। बढ़िया। 9 9 10 when they R3 stringless Popis baby elemental mastery created। अच्छा है, elemental mastery। एनर्जी रिचार्ज, यहाँ पर एनर्जी रिचार्ज क्यों लगा है भाई? यहाँ पर एलिमेंटल मास्टरी होना चाहिए था। एनर्जी रिचार्ज क्रिट रेट, ये मुझे डिफेंस लग रहा है यार। इनके पास तो हाँ सपोर्ट डीपीएस नहीं है इनके पास, सारे के सारे आर्कॉन्स है। अरे ये बात होता होगी। 65 188 ड्रैगन्स बैन सपोर्ट विनती फोकस ने मैं नमाज लगा। एलिमेंटल स्किल कैरेक्टर हैज 50 more energy, they lost 50 energy and normal charge plugin। नॉर्मल के लिए लगा रखा है भाई ये, नॉर्मल चार्ज के लिए 30.3% क्रिट डैमेज, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब 13.6% क्रिट रेट, अच्छा यार बहुत बढ़िया, एक नंबर है। बढ़िया एकदम बढ़िया। इसके कॉन्सलेशन देखिए। और हाँ इसको R4 करे वाला है इन्होंने कॉन्सलेशन। ट्रिपल क्राउन, हाँ ये तो ट्रिपल क्राउन ही करना पड़ता है। उसके नॉर्मल अटैक हो गया, सभी ट्रिपल क्राउन ही करना पड़ता है, सभी इम्पोर्टेंट है। 888 80 179 मैसिव। अरे भाई ये मेरे पास शॉट है, ये शॉट मेरे पास है जो कैंडल्स नहीं लिया, ठीक है। कैंडल्स के इवेंट में आया था ये शॉट मेरे पास है। वंडर स्टफ एलिमेंटल मास्टरी जब ठीक है क्रिटिकल डैमेज, एनर्जी रिचार्ज क्रिटिकल डैमेज, बहुत बढ़िया। क्रिट रेट, एनर्जी रिचार्ज, एलिमेंटल मास्टरी, क्रिट डैमेज। ऐसे पीस बहुत रेयर है भाई, ऐसे पीस कभी कभार मिलते हैं। एलिमेंटल मास्टरी, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज। यहाँ पर EM होना था भाई, ये भी बहुत बढ़िया होता था। और ऊपर है EM स्टार्ट से उसके सब स्टार्ट्स नहीं है इसके। क्रिट रेट 2 पीस थंडरिंग फ्यूरी, 2 पीस नमाज रेमेजेस थंडरिंग फ्यूरी। हाँ ये भी अच्छा है इलेक्ट्रो डैमेज बोनस के लिए, अच्छा ये भी अच्छा है। क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, इलेक्ट्रो डैमेज बोनस। क्रिट डैमेज
अरे भाई इसका ये देखने का रहा 229। नाइस नाइस, इसको R5 कर लेना था भाई। ये मतलब ये बढ़िया है। कॉन्सलेशन 0, टैलेंट 888। अच्छा हम भी ऐसा ही बिल्ड करेंगे फिर। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ ऐसे ही बिल्ड करेंगे। अच्छा बिल्ड है भाई, अच्छा बिल्ड है। Arataki Ito. Of course I know him. We've been trying to apprehend him recently. तो मेरे पास देखो, पहला तो वेंती है, दूसरा कचिंग है, तीसरी अपने जीन है, जीन। We know he's already left Inazuma City, but with no clues to follow, we have no choice but to commission others for help, including the adventurers. Catherine says that Arachone मेरे पास hasn't done anything seriously bad before, so it seems pretty strange. बहुत सारे भाई, गेमिंग स्ट्रीट के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मगर मेरे पास 5 या 6 होंगे। Paimon's curious. Is there any evidence of all this stuff he's accused of? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people on the case. For starters, most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni, the horns are a dead giveaway. At first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to everything and started trying to provoke the officers. मेरा भी वैसा ही भाई, मेरे पास 5 या 6 होंगे 5 स्टार। What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire gang. He must have been planning the whole thing right from the start. Of course he did. Whether material or psychological, there is plenty of evidence either way. ट्रैवलर को मिला के 6। He's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. Word is that he also takes care of someone in his gang, and that the burden of it takes quite the toll on him. After scrounging for a living all these years, maybe he thought that being the bad guy would be an easier ride. हाँ ये भी 50p है, बहुत सारे मतलब उसके पास कैरेक्टर्स है, वो पहले से खेलता होगा। As for his psychological motives, it's a bit embarrassing to talk about, but we confiscated his vision during the Vision Hunt Decree. At the time, Arataki Ito put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end we had to enlist the help of Kujo Sara to finally secure his vision. The Vision Hunt was a mistake, but we never expected that he would go to such extreme lengths to take revenge on us. हाँ चीज़ ये बहुत भंगार है भाई, चीज़ ये बहुत भंगार है, उस काम के नहीं वो। He does sound a little unstable, just like people have been saying. If the two of you are able to capture Arataki Ito, please bring him straight here. We'll handle him from there. Thanks for all the info. ठीक है फिर, तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ठीक है, अभी देखो, ये है 24 5-स्टार कैरेक्टर। ठीक है, 20, उसके बाद है अपनी अलाव है मेरे पास। सुमित भाई मतलब गेमिंग स्ट्रीट गेमिंग भाई, मेरे पास नहीं गेमिंग स्ट्रीट भाई, तो मेरे पास है मगर पुराने अकाउंट में है एलॉय द क्रायो आर्कॉन। ची भाई ची वो कुछ काम के नहीं ज़्यादा। 20 है। अब देखो मेरे अपने कैरेक्टर दिखा तो मैं आपको। ठीक है
विंती है अपने पास, उसके बाद जिन है, जिन के बाद अयाका है। मतलब ये देखो ये एक, ये दोन, तीन, मिको 4, कचिंग 5 हो गए। देखो 5 5 5 5 5। हाँ ठीक है, अपने पास 5 कैरेक्टर है 5 स्टार के। एक, ठीक है, ये एक, ये 2, 3, 4 और ये 5 5 स्टार कैरेक्टर है अपने पास। Haina remembers that there's a detective agency here in Inazuma. Maybe we can try asking there. काजुहा निकलने से पहले तुम नहिदा कबूल करो यार। Please speak to President Sung. I'm just a Remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Please speak to President Sung. I'm just a help. चलो भाई साहब, मुझे सोना है अभी। तो सुनो भाई आप, ओके अब गुड नाइट करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है अभी। Please speak to President Sung. I'm just a help. The case before us is a strange and unprecedented one indeed. हाँ ना यार, मुझे आज बहुत नींद आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो गया आज। तभी मैंने थोड़ा टाइम निकाला, मतलब मुझे अभी थोड़ी देर हो गई आने में, इसीलिए ये थंबनेल बनाने में, थंबनेल के लिए आइडिया करने में मुझे बहुत देर हो गई। Please speak to President Sung. Yes, भाई I'm अभी just a help. I'm going to sleep यार, बहुत नींद आ रही आज, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो गया। ठीक है, जाना पड़ेगा भाई। चलो गुड नाइट, कल मिलेंगे, कल ज़्यादा देर खेलेंगे फिर। ओके ओके बाय। Bye. Thank you for coming. Have a nice day. Good night. Sleep.